So this is how we define backup hub on the sport side. यही कॉन्फ़िगरेशन हमारी राउटर 4 पर भी चली जाएगी. Rest is all going to be same. Okay, let's go for it. ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी राउटर 1 के लिए है. This is for router 2. Router 3. Router 4. Show IP EIGRP neighbor. आप देख सकते हैं कि हमारे पास EIGRP के दो नेबर्स हैं. Show IP NHRP हमारे पास दो स्टैटिक एंट्रीज हैं दोनों हब्स. और अगर हम हब राउटर्स पर देखें तो हब राउटर के हब राउटर आपस में भी नेबर्स हैं और ब्रांचेस भी उनके नेबर्स हैं. अब हमने R1 के ऊपर एक लूपबैक ऑलरेडी बनाया हुआ है 192.168.1.1 और इसी तरह जो हब 2 है उसके ऊपर भी हम एक लूपबैक बना लेते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पसेस और उसको भी IP 1.1 ही दे देते हैं. सो दिस विल एक्ट एज अ कॉमन सबनेट. 1.1 हमारा R2 पर भी अवेलेबल है और 1.1 हमारा R1 पर भी अवेलेबल है. सो इस IP से पिंग आती रहनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ विच राउटर इज अप और डाउन और ये हमारा कॉमन सबनेट एमुलेट कर रहा है. यहाँ शो IP रूट EIGRP करें अगर तो हमें 192.168.1 का सबनेट दो वायास से नजर आ रहा है और इसमें जो प्राइमरी वाया है वो इस वक्त अगर 2 का नजर आ रहा है तो इट मीन्स कि हम प्राइमरीली 2 से उस सबनेट की तरफ जा रहे हैं और वैसे लोड बैलेंसिंग हो रही है. तो पिंग करते हैं 192.168.1.1 को सोर्स में 192.168.3.1 से. So we are able to ping the common subnet और हम ये करते हैं कि हम हब 2 पे जाके शट डाउन कर देते हैं एज इफ हब 2 डाउन हो गया. So the traffic is still moving on. हम इसको नो शट करते हैं. Let's wait for the neighborship of EIGRP to come up और अब हम R1 वाली साइड को शट कर देते हैं. So this is the side the traffic was going through and it should restore shortly. So now we are getting reply from router 2 because router 1 is right now shut down. और अगर हम दोनों को ही शट डाउन कर देंगे तो फिर जाहिर है हमें रिप्लाई कहीं से नहीं आएगा. Reply should not come. Let's see where it is coming from. Yes, it is because this default route क्योंकि हमने आज एक लैब जो करनी है गेट VPN की उसके लिए हमें अंडरनीथ हमने ये स्टैटिक रूट्स डाले हुए जिसकी वजह से प्लेन
routing भी possible है. So what we can do is we can remove those routes, because ISP में usually we do not need those routes. So let me remove them. Okay. So we are not able to receive any reply from the private IP of target site, क्योंकि ISP is no more routing private subnets. इससे पहले ये एक MPLS का सिनेरियो बना हुआ था. और अब हम हब अप करते हैं. Let's go for R2 first. I think we should repeat from the start ताकि हमें EIGRP की configuration verify हो जाए. चलिए अब हम पिंग करते हैं 1.1 को सोर्स में 3.1 से. So it is pinging and the traffic passing through is of GRE from ISP data plan. अच्छा जी, now we bring down tunnel interface of hub 2. It should restore its communication from router 1 shortly.
तो ये राउटर 1 पर स्विच हो गया। और अगर हम राउटर 1 को भी डाउन कर दें, then there is no alternate path available to reach common subnet until हम इनमें से किसी एक को अप करें। So let's bring back up router 2. Should not take this much time. Instead of waiting, no shut कर लेते हैं। Because due to EIGRP टाइमर, जब तक हमारी नेबरशिप पूरी तरह से एक्सपायर नहीं हो जाएगी तब तक वो ऑल्टरनेट पर शिफ्ट नहीं करेगा। So either we should play with the timers to make it responsive, or else हम फिलहाल शट नो शट कर रहे हैं ताकि नेबरशिप उसकी रीनेगोशिएट हो जाए। और इस वक्त इट इज गोइंग थ्रू राउटर 2 और राउटर 1 का जो इंटरफेस है दैट इज शट डाउन। इसको नो शट कर लेते हैं। लेट्स वेट फॉर द नेबरशिप्स टू कम अप फ्रॉम दिस साइड एज वेल। और उस राउटर के अप होने से कोई खास इसकी कम्युनिकेशन पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये जहां से जा रहा है वहीं से मूव हो रही है ट्रैफिक। So either we wait for long or okay it came up, और हम फिर से पिंग लगा देते हैं और इस दफा हम राउटर 2 को शट करते हैं। So इस दफा हमारी जो कम्युनिकेशन है वो राउटर 1 के जरिए होना शुरू हो गई है। और अगर हम कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन आवर स्पोक्स, should be able to communicate। रूट चेक कर लेते हैं। हमारे पास 1 का रूट आया हुआ है, वी डू नॉट हैव द रूट ऑफ 4। ओके, नाउ वी हैव रूट ऑफ 4, क्योंकि हमने दोनों हब इकट्ठे ऑफ कर दिए थे तो इसलिए वो साइट इशू में थी। Now we are able to communicate between two spokes directly, और स्पोक्स के दरमियान कम्युनिकेशन क्योंकि फेज 2 ट्रिगर हुआ है तो हमने दोनों हब डाउन कर दिए। तो दोनों हब के डाउन होने के बावजूद जो स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन है वो चल रही है, और ये स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन तब तक चलती रहेगी जब तक NHRP डेटाबेस आउटडेट नहीं हो जाती। You can see the tunnel interface is down on both sides, but still branches are able to communicate. Now you can see कि जैसे ही नेबरशिप खत्म हुई हमारे रूट्स चले गए, जैसे रूट्स चले गए हमारी स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन भी मुतासर होती। और अगर हमने स्टैटिक राउटिंग की होती, EIGRP ना होता तो ये टाइम थोड़ा और आगे तक चला जाता, क्योंकि NHRP का टाइमर फिर ट्रिगर होता। क्योंकि हम EIGRP यूज कर रहे हैं तो पहले EIGRP का टाइमर ट्रिगर हो गया।
हम वापस हब को लेके आते हैं ताकि रूट्स एक्सचेंज हो सके।